देखिए याद नहीं होगा आप लोग को, you have to make the isomer. Okay, what is FAC isomer? Please look in your notes, you will see what is a FAC isomer. It is saying chlorine, cobalt and chlorine. Saf, can you send me what you have made? What is the FAC isomer that you have made? Send me on WhatsApp now. The FAC isomer that you have made for cobalt, NH3 thrice and chlorine. What happened, guys? Now, FAC isomer तो सब बना सकते हैं ना? Yes or no? Alan, tell me. What is a FAC isomer? क्या बोला था हमने? Yes, Alan. No answer. Farhad, tell me. What is a FAC isomer? What is a FAC isomer? Yes, Farhad. You guys cannot hear me or what? Huh? What happened? Alan, Farhad, Hanifa, Hiba, Saf. Can you hear me? Yes, sir. So what is a FAC isomer? No same ligands at 180 angle, like No opposite to each same. other. Yeah. ये equal नहीं है कुछ Alan. Equal ligands नहीं है. No same ligand at 180 degree. सही है? Now you tell me what type of angles do we have in octahedral? Octahedral में सिर्फ दो ही एंगल होते हैं, या तो 90 या तो 180. ये बिल्कुल आप लोगों ने इतना आसान सवाल को पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग. व्हाट हैपेंड? अब तो कीजिए. नो सेम लिगेंड एट 180 डिग्री. सो क्लोरीन आपने रखा यहाँ पे, उसके अपोजिट क्या आ जाएगा? बताइए. टेल मी व्हाट विल बी अपोजिट टू क्लोरीन? क्लोरीन और NH3. व्हाट शुड बी अपोजिट? NH3. देन अगेन another chlorine. What should be opposite to chlorine? What should be opposite NH3. to? सेल्फ स्टडी कीजिए आप लोग, ठीक है? एकदम कुछ नहीं पढ़ के आए ऐसा लग रहा है. क्लोरीन के अपोजिट क्या रहेगा? फिर से NH3. NH3 again. So again all of these angles are what? 90 degrees. There are only two types of angles, either 180 degree होगा या तो 90 degree होगा in octahedral. Okay. 5 मिनट आप लोग देख के ना रिवाइज कर लीजिए प्लीज, ठीक है? टेक 5 मिनट बट रिवाइज दी आइसोमर्स. एक दो सवाल बनाइए जो कल हमने कराए थे, है ना? खुद से अगर आपने सवाल नहीं किए तो उसका मतलब होता है कि घर में जाकर खुद से करना है उसको. ओके, सो प्लीज रिवाइज फॉर 5 मिनट्स, देन आई विल स्टार्ट. प्लीज रिवाइज फॉर 5 मिनट्स. आइसोमर्स रिवाइज का मतलब ट्राई टू डू अ फ्यू क्वेश्चंस लास्ट क्लास से.
चलिए, I hope you are done. Try this question. You have to see a chiral complex, है ना? Chiral का मतलब होता है you have to identify the optical isomer. Which of the following has a optical isomer? Geometric, not a geometrical isomer, optical isomer देखना है आपको. And you have to tell what is an optical isomer here. Yes, Hanifa, correct. Alan, correct. Very good. Yes, Hanifa and Alan, correct. What about others? What about others, guys? They can see the important ones that I have told. Na? You will get questions from there only. What are the important complexes that you have to remember? The fat mer ones and the cis and trans ones, है ना? These are the important ones. और एक जो बहुत ही important है वो कौन सा हमने बताया था? For a bidentate ligand, कौन सा? MAA, whole twice and A2. ठीक है? So this complex has one cis, one trans, and the mirror image of cis, which is what which is a optical isomer. Okay, so please try to look out for those options. यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे option A देखिए आप. Option A is of that type. Chlorine is what? Chlorine is a monodentate ligand, two monodentate ligand, and two bidentate ligands. This is going to be what it is going to have a optical isomer. Okay, and that is why it is a chiral compound. This is a chiral compound. None of the following are going to be chiral. Why? Like, सबसे पहले तो trans. Whenever you write trans, that means these two chlorines will be at what? Chlorine and chlorine are at 180 degrees. Okay? Here also trans. So here also chlorine and chlorine will be at 180 degree.
Here we have PtCl2 NH3 whole twice. इस केस में तो when you have a square planar complex, then in this case there is no chiral complex. वहां पे optical isomer होता ही नहीं है, no optical isomer. ठीक है. So when you have any same ligand, if you have two same ligands at 180 degree, तो उनका कभी भी optical isomer नहीं बनेगा ना. And that point is also written here. Whenever same type of ligand placed at 180 degree, it will not show optical isomer. ठीक है. इस केस में क्या होगा? This will be ऑप्शन ए होगा ना. डी क्यों होगा फरहत? ऑप्शन ए होगा ना फरहत. ऐसा नो Yes, sir. कुछ है ना. ठीक है. आस्किंग अबाउट काइरल कॉम्प्लेक्स. चलिए एक और सवाल कीजिए. सेम ही है बिल्कुल, है ना. सो दैट कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाइडेंटेट लिगेंड में कौन सा इंपॉर्टेंट है केस? मेटल. देयर आर टू बाइडेंटेट लिगेंड्स and two monodentate ligands. This case is very important in stereochemistry. देखिए अब एक what happened guys? No one is answering. हाँ, no one is answering. ओ माय गॉड, कैसे कैसे चलेगा आप लोग? हाँ बताइए. छोटा सा सवाल आप लोग नहीं कर पा रहे. सेम टॉप सेम सेम चीज पढ़ाया अभी हमने, सेम चीज पढ़ाया. फिर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग. सब में क्या पूछता है? इट इज आस्किंग आस्किंग अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना. दैट मींस विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा या फिर इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा. विल दिस हैव ऑप्टिकल आइसोमर और विल दिस हैव ऑप्टिकल आइसोमर? ओ गॉड. एक तो पहले हमको अटेंडेंस लेने दीजिए. कौन कौन है यहाँ पे? अक्सा, आर यू प्रेजेंट? पहले मैं तुम्हें मैसेज किया. फरहत, यू आर हियर राइट? अक्सा, यू आर हियर? Yes, sir. फरहत, यू आर हियर? Yes, sir. हनीफा, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. हिबा, आर यू हियर? Yes, Hiba. Yes, Hiba, are you here? Actually, it seems here. Maimuna, you are here? Yes or no? Yes, Maimuna. Okay. ठीक है.
can you please, those who are here, can you please turn your mic on? And answer me, what is the meaning of trans? What is the meaning of trans? ठीक है, आप लोग 180 डिग्री के कंसेप्ट को लेके चलिएगा. सेम लिगेंड at 180 डिग्री. ये स्टेटमेंट इज दिस फॉर ट्रांस या सिस? ये ट्रांस के लिए ट्रू है या सिस के लिए ट्रू है? टेल मी. आंसर इन चैट गाइस, ऑल ऑफ यू. आंसर मी 3 थिंग्स. It is true for this statement is true for trans. Second, false for trans. Third option, I don't know. And please, I need answer from everyone because सारे options हैं. ठीक है? It is either 1, 2 or 3. Okay, Hanifa. Okay, Saif. Same ligand at 180 degree. देखिए, Alan, please restrict yourself to the definition that I am teaching, है ना? मतलब जो आप डेफिनेशन बोल रहे हैं ना, उसमें हम ही आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. ठीक है, जो आपने बोला ना ट्रांस अपोजिट और सिस सेम, उसका कोई मतलब नहीं बनता है. ओके, सो कीप द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ 180 डिग्री एंड 90 डिग्री. अपोजिट और सेम का प्लीज डेफिनेशन को मत रखिए. कीप द डेफिनेशंस एट 180 डिग्री में कोई लिगेंड्स प्रेजेंट है या फिर 90 डिग्री में कोई लिगेंड प्रेजेंट. ओके फरहद. What about others? I've got no answers from Hiba has not answered. I think Mamuna is not here. I don't know. Saf has answered. Aksa has not answered. Aksa, please answer. Alan, can you answer me from one of these options? 1, 2, 3. Okay, Aksa. Alan, can you answer from one of these 3 statements? Okay, fine, Alan. I think Hiba has not answered. Yes, Hiba, please answer. 1, 2 or 3. Hiba, please answer 1, 2 or 3. Hiba and Mamuna has not answered. Baki, I think everyone answered. Okay, Mamuna. Hiba, please answer. Seems Hiba is not here. ठीक है, हम बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट कर सकते. ठीक है, आप सबसे पहले इसको ध्यान रख लीजिए. सेम लिगेंड एट 180 डिग्री, इसका क्या मतलब है? आप मान लीजिए इस केस में क्या लग रहा है आपको आप लोगों को? टेल मी, इज दिस ट्रांस और सिस? ये बताइए अब, ये ट्रांस है या सिस है? इधर आपके मान लीजिए बी और बी लगा हुआ है, बट यू हैव टू ओनली सी 2 लिगेंड्स अपोजिट टू ईच अदर. बताइए, इज दिस ट्रांस और सिस? आंसर मी गाइस. जो हमने बनाया, इट इज ट्रांस और सिस. ओके हनीफा. ओके सैफ. तीसरा ऑप्शन देते हैं यहाँ पे आईडी के. आई डोंट नो, ये ले लीजिए तीसरा ऑप्शन भी. टेल मी ट्रांस और सिस गाइस, जल्दी बताइए ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. ओके फरहद, आंसर कीजिए. अक्सा, मैमूना, हिबा, प्लीज आंसर. एलन, प्लीज आंसर. आई थिंक एलन हैज नॉट आंसर्ड. नो, एलन नहीं आंसर किया. हनीफा, मोहम्मद सैफ एंड फरहद हैज आंसर्ड. ठीक है, अक्सा प्लीज आंसर. अक्सा, एलन सोच के बताइए जल्दी से. इज दिस ट्रांस और सिस? ओके अक्सा. Then Mamuna has not answered. Mamuna, please answer. Mamuna, please answer. Mamuna and Hiba. Yes. Okay, Alan. Okay, Hiba. So Mamuna got disconnected. ठीक है. See, many of you got wrong answer from this question in the red. Same ligand at 180 degree. बहुत सारे लोगों ने गलती किया. But for this question, most of you were right, except a few. This is trans. Okay, this is not cis. सबसे पहले ध्यान रखिए, ये क्या होता है? This is trans. When you have same ligands, है ना, इसी को एलन वाज सेइंग सर, जब सेम लिगेंड क्या हो, दे आर अपोजिट टू ईच अदर. लेकिन बट प्लीज डोंट रिमेंबर अपोजिट टू ईच अदर. उससे दिक्कत क्या होगी? इफ आई आस्क अबाउट दिस स्टेटमेंट, ए ए बी बी
Sometime this may look opposite to each other. ठीक है? What will happen? This will look opposite to each other, but this is not trans. तो हमेशा trans is what 180 degree. Trans में क्या होगा? Same ligands at 180 degree. ठीक है? Please remember this. Trans का क्या मतलब होगा? Same ligands at 180 degree. That means any trans isomer can not be optically active and it cannot have ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है, प्लीज इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए आप लोग, और इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए. सेम लिगेंड एट 180 डिग्री का क्या मतलब हुआ? इट मींस दैट इट इज अ ट्रांस आइसोमर. ठीक है, सेम लिगेंड एट 180 डिग्री अगर है, सेम लिगेंड एट 180 डिग्री, तो क्या मतलब हुआ? ट्रांस आइसोमर हुआ. और कोई भी ट्रांस आइसोमर ना, इट कैन नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज इफ इट इज हैविंग सेम लिगेंड एट 180 डिग्री, तो देयर विल बी अ प्लेन of symmetry वहां पे. Okay, so there will be a plane of symmetry which is going to give you a chiral complex. It will not be chiral. ठीक है, optically active नहीं होगा. So for sure this trans is not going to be, it is not going to be optically active. Only the cis form is going to be optically active. ठीक है, फिर क्या मतलब है? A cannot be optically active but B can be optically active. This is the correct option. Please write this down, guys. All of you wrote this, yes or no, please tell me, guys. हाँ जी, सबने लिख लिया? ठीक है, अब देखिए, Yes, अभी sir. तक तो हम समझा ही रहे हैं ना, अभी तक आप लोगों का टेस्ट तो हुआ नहीं. दैट मीन्स आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन. वो सही कर दिया तो फिर हमको थोड़ा सुकून मिल जाएगा कि आप लोगों को आ गया है ना. सो लेट मी फेच अप अ क्वेश्चन. इसको क्या बोलिएगा? सिस बोलिएगा, ट्रांस बोलिएगा, लेवो बोलिएगा, डेक्स्ट्रो बोलिएगा?
Okay, sir. फाइव तो ऑप्शन में ही नहीं है फरहद। हाँ, अब ठीक है। Okay, Akshay has also answered. Farhad has answered. What about others भाई? Please answer. What happened? Alan answer कीजिए, हनीफा आंसर, हिबा आंसर कीजिए। बहुत ये तो आंसर सवाल है जो बोर्ड्स वगैरह में आता है, आप लोग इसमें इतना टाइम लगा रहे हैं। पहले आंसर कीजिए, सवाल बाद में लिख लीजिएगा, हम डिस्कस भी तो करते हैं, उसमें टाइम जाएगा ना। आंसर कीजिए प्लीज जल्दी। ओके एलन। ओ गॉड, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, हनीफा, हिबा, मैमूना। यस हनीफा, नहीं समझ में आ रहा है? यस हनीफा, टेल मी। हनीफा, हिबा एंड मैमूना। ओके मैमूना, ओके हिबा, ठीक है। अरे तो देखिए, थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा तो कम से कम कुछ तो पढ़ाना चाहिए था आप लोगों का। राइट वन मोर नोट। लेवो एंड डेक्स्ट्रो can only be experimentally determined. Can only be experimentally determined. We can never predict. Can never predict it by looking at the structure. ठीक है, चलिए। अक्सर you will answer me now. अक्सर choose any one of the ligands A B में से 1 2 3 4 5 और 6 में से choose any ligand. अक्सर please choose any ligand 1 2 3 4 5 6 में से 1. 1. What is opposite? What is on 180 degree to 1? Here we have A and what is opposite to A? A का opposite नहीं, 180 degree में कौन है? A के 4. हाँ, 4 में क्या है? 4 में क्या है? A और B? Tell me. A. A और B? अब बताइए, दूसरा कोई लिगेंड चूज कीजिए। 2. What is at 180 degree of B? B. So which isomer will it be? Trans versus cis or trans? Tell me. Yes, Aksa. Will it be cis or Yes. trans? Cis. Okay. What is the definition of cis? Same ligand at 180 degree. Oh God, ये तो हमने अभी ना बताया। Same ligand at 180 degree is trans. ये लिखा आपने कि नहीं लिखा? Did you write this? Yes. तो हमने तो लिखा same ligand at 180 degree is trans. हम क्या करें अब बताइए? हाँ, कैसे चलेगा? ध्यान नहीं है आपका क्या? रोजा लग रहा है आपको? जी अक्सा, Yes, sir. अभी पढ़ाया बस हमने ना। सेम लिगेंड एट 180 डिग्री इज, बोलिए। Trans. सेम लिगेंड, ठीक है। नाउ देयर इज वन, एक छोटा सा आप लोग हम हेल्प बता देते हैं क्या करना रहता है।
you will have different cases, है ना. In the last class I also told you many things. जैसे for example इस केस में आपको ना, when you saw here there are 4A, ठीक है, आपको देखिए 4A है और 2B है. So in that case you will look at the lesser number. आप किसको देखिएगा? B को देखिएगा. ठीक है, आपने B को देखा, they are opposite to each other, trans है इन दोनों केस में, तो it is going to be trans. Please look at that. Okay, so check the ligand which is present, which has two atoms लिखिए, या फिर which has two atoms. हाँ, ऐसे कैसा मतलब है, which has is present two times in complex. ठीक है, if that is at 180 degree, then वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ट्रांस. ठीक है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं. आई थिंक वी डिड सम एग्जांपल इस तरह का. एक एग्जांपल शायद हम लोगों ने किया था. हाँ, MA4BC. एक और चीज ये लिख लीजिए, इफ 4 ligands are same, then check the rest 2 ligands. If they are at 180 degree, then trans, है ना. ऐसे for example, here we have ठीक है, एक ये है. बताइए which one of them is trans, A और B? कौन सा ट्रांस है? अगल बगल प्लीज मत देखिएगा, ऑक्टेटल में पागल हो जाएगा आपको. ठीक है ना, वो 90 डिग्री और अपोजिट एंड सेम इज ओके टिल यू हैव स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर. इन ऑक्टेटल 180 डिग्री एंड 180 डिग्री को ही देखिए सर. ए और बी बताइए कौन सा ट्रांस है? करेक्ट सर, वेरी गुड. Please see here, if 4 ligands are same, then check the rest 2 ligands. If they are at 180 degree, then trans. Aksa, tell me which one of them is trans, A or B? Yes, Aksa, tell me which one of them is trans. A is trans. Very good. ठीक है, I hope everyone gets it. क्या देखना है आपको यहाँ पे? आपने क्या देखा अक्सर बताइए सबको. What did you look at first of all? आपने A को देखा या BC को देखा? ये सक्सा A को क्यों देखा आपने? अरे A तो 4 सेम है ना. ठीक है, A को नहीं देखना है. If you have 4 ligands are same, A, 4 ligands same है, yes or no अक्सा? Yes, sir. So what you are going to see, A के अलावा कौन है? B और C. B और C में से किसी को भी देख लीजिए. अब देखिए B के अपोजिट कौन है. अगर B के अपोजिट आपके पास A नहीं है ना, B के अपोजिट क्या है? If 4 ligands are same, then check the rest 2 ligands. Rest 2 में B और C है, and B और C 180 डिग्री में, that means it is trans. ठीक है, नेक्स्ट केस में भी आपको क्या देखना है? B और C को देखना है. अब B के अपोजिट में देखा आपने C है? नहीं है, that means it is cis. Got it? Yes or no? Please tell me. ठीक है. अब हम इस तरह का सवाल करके चलिए छोड़िए, और हम सवाल नहीं कराते इसका. Let us go back to bonding theories. ठीक है, so in bonding theories we can cover
वर्नर्स थ्योरी बहुत आसानी से, ठीक है। टुडे विल कवर्स वर्नर थ्योरी एंड देन वी विल मूव ऑन ना। वर्नर थ्योरी करके क्लास खत्म करेंगे, VBT एंड CFT वगैरह ये सारे नेक्स्ट क्लास में। सो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग there are few things that you should know. Werner said that there is a coordination sphere and then there is an ionization sphere or there we have counter ion, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, counter ion होता है, ठीक। Now, if you in coordination sphere all bonds are coordinate covalent, and counter ion क्या होता है, these are ions, ठीक है। ये क्या होता है, ions, these are free ions, बिल्कुल, these are free ions, okay। So whenever you have to do any ionic reaction, then in that case what is going to happen, then in that case the free ions are going to react, ठीक है। Free ions are going to interact, nothing from the coordination sphere is going to react, ठीक है। For example, let me see if I have actually, for example, you have CO Cl3 NH3, ठीक है, CO Cl3 NH3 whole thrice, and outside you have 3 chlorine atoms, ठीक है। Now in this case this is coordination sphere and this is the counter ion. So how many free chlorines we have, tell me guys, in this how many free chlorines do we have, कितने हैं हमारे पास, tell me guys, how many free chlorines do we have, 3. So we have 3 Cl negative. Now this 3 Cl negative can react, और ये basically वर्नर ने किया था रिएक्शन किसके साथ, AgNO3 के साथ, and he got what, 3 moles of AgCl. Now ये सारी चीजें उसको नहीं दिख रही है, प्लीज रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है ना। ही इज एडिंग AgNO3 in what, he is adding AgNO3 in excess, and let us suppose if he takes 1 mole of this compound, ठीक है, he started with 1 mole of this compound, he does not know the constitution, please remember। क्या वर्नर को पता था what is the formula or what is the composition of the coordination sphere and the counter ion कितने coordination sphere में है और कितने counter ion में, no, he did not know anything। He had some colored complex वहां पे and he took 1 mole of it, he added excess of AgNO3 and then he saw that he is getting 3 moles of AgCl. Now from this 3 moles of AgCl he can deduce that we have 3 counter ion chlorine. Is that clear, yes or no, please tell me। All of you understood what Werner did, yes or no? फिर से बताएं, Yes, sir. नहीं समझा, फिर से बताएं क्या, tell me guys। yes sir नहीं आता किसी का कन्वेंशन से, Sir, can you say again, please? yeah sure। तो बोले ना हम कभी मना किया आप लोगों को, please ask me, okay। For example, let us suppose हम पीछे से चलते हैं, there was something यहाँ पे ना, there was some compound and what he did, Werner reacted this with AgNO3 and he got 2 moles of AgCl, and now I'm asking how many free chlorines does this complex has, tell me guys, how many free Cl negative इसके पास होगा, कितना free Cl negative होगा, we have 2. taken 1 mole of this, है ना, यहाँ पे that means there will be something in the brackets और Cl2 होगा, बात सही है सबकी, yes or no, please tell me guys। All of you understood this now? Yes, sir. ठीक है। Now let us look at this question here। The correct order of stoichiometries of AgCl found when AgNO3 is treated with complexes COCl3 6NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3 क्या होना चाहिए, see here guys, cobalt is going to make 6 bonds, ठीक है, cobalt is going to make how many bonds, 6 bonds, preferably with nitrogen, preferably with NH3, so cobalt and 6NH3 are going to make bond और 3 chlorines will be what, यहाँ पे 3 Cl negative free हो जाएगा। In the next case 6 bond बनाने चाहिए, cobalt and 5 NH3 तो होगा और chlorine से कितना, and 1 of the chlorine, so बचा कितना free chlorine बताइए, how many free chlorines do we have in this case, 2. 2 Cl negative। Next cobalt अक्सा आप बताइएगा, okay, cobalt will make 4 bonds with NH3, how many more bonds does it have to make, अक्सा tell me। अक्सा नहीं ध्यान दे रही है क्लास में, हाँ अक्सा, सी नो रिप्लाई आल्सो, है ना, टेल मी, बाकी लोग बताएं, हाउ मेनी मोर बॉन्ड डज इट हैव टू फॉर्म, इट फॉर्म 4 with NH3,
2 more. So 2 more it forms with chlorine. और बचा कितना chlorine? 1 Cl negative is remaining. Can you hear me, guys? Now we can, sir. Now you can hear me? Okay, but my system has broken, I think. Let me see if it is working. Or will just stay in the class, I will end, okay? I will just rejoin, okay? Please stay in the class. Okay. Give me a second, guys, okay? Okay. So I was talking about Werner's theory, है ना? And in Werner's theory, we saw that in the last case, it is going to have one free chlorine. One chlorine negative will be free. Now, in this case, what we need to have from this 3Cl, if I react this with AgNO3, I will get 3 moles of AgNO3. इससे हमको कितना
मिलेगा 2 moles of AgNO3, इससे कितना मिलेगा आपको 1 mole of AgNO3. So what will be the correct answer? 3, 2, 1. B is the correct answer. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. What about others? Aksa, Alan, Farhat, Hanifa, Hiba, Maimuna. Understood? Yes or no? Yes, sir. Okay. So please write this down. Sir, how can we know that the metal will make this many atoms? नहीं, see, आपको एक तो या तो इसी यही ऑप्शन दिया जाएगा, और else they will give you something different, but it is going to make 6 bonds. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा. Okay, so it is going to make 6 bonds. दूसरा आपके पास सवाल आएगा, सर तो सर ये क्लोरीन के साथ सारे बॉन्ड्स क्यों नहीं बना रहा है, NH3 के साथ क्यों बना रहा है? ऐसा भी तो हो सकता था, यहाँ पे 3Cl इसने कोबाल्ट क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाता और 3 NH3 के साथ बनाता. तो ये आपको समझ में आएगा जब यू विल डू CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जब आप कीजिएगा तो वहां समझ में आएगा दैट NH3 हैज अ हायर डेलो, है ना. NH3 is what? It is a stronger SFL है, ये strong field ligand है in comparison to chlorine. ठीक है, in comparison to chlorine, NH3 is a stronger field ligand. That is why cobalt will prefer nitrogen or NH3 to form bonds rather than chlorine. ठीक है, चलिए moving on. Try this one. They're asking cobalt 3 chloride forms several octahedral complexes with ammonia. Which of the following will not give a test of chloride ions with silver nitrate? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में से which one of them has 0 free Cl negative? कहाँ पे Cl negative है ही नहीं, एक भी नहीं Cl negative है, बताइए. In which of the cases? फिर से देखिए ना, ऐसे इतने जल्दी आप हड़बड़ी में क्यों हैं? Cobalt will make 6 bonds. It will prefer to make bonds with ammonia, है ना. और 6 के 6 बॉन्ड जब वो अमोनिया के साथ बच जाएगा तो 3 तो क्लोरीन बच रहे फ्री. You have to see where you will have 0 free chlorine negatives. देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज जाइए. The number of ammonia you have, ठीक है, फिर हम आपको बता देते हैं. No Hanifa, number of free Cl negatives कितना हो जाएगा? This will be equal to 6 minus number of NH3. एक सेकेंड. This will be equal to, how did I write the formula? हनीफा आप सही है, सैफ आप सही है ना. Number of free chlorine negatives will be equal to P minus 6 minus number of NH3. हाँ ये लिख लीजिए, 3 plus number of NH3 minus 6. चलिए, I hope this will make sense. And usually you will have NH3 only. ठीक है, NH3 और क्लोरीन के बीच में होगा ये. हाँ फरहत सही है, वेरी गुड. So in the first case अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएं, I hope this is going to work. Number of NH3 is 5. 5 minus 6, it is equal to how much? -1, है ना. तो 3 minus 1 will be equal to 2. ठीक है, यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 2 Cl नेगेटिव मिलेगा. यहाँ से आपको कितना मिलेगा? नंबर ऑफ NH3 is 6. 6 minus 6 is equal to 0. यहाँ से आपको मिलेगा 3 Cl नेगेटिव. In this case, how much you are going to get? 3 plus number of NH3 is 3 minus 6. कितना हो जाएगा? 0.
इस केस में बताइए लास्ट केस में कितना मिलेगा? यू हैव 4 NH3 ना, तो 4 के साथ 1 NH3 मिल जाएगा यहाँ से, सॉरी 1 Cl नेगेटिव मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए फॉर्मूले को। ठीक है, अच्छा अब हम आपको ना एक थोड़ी सी चीज बता देते हैं जो शायद आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ आ जाए। इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, देयर इज समथिंग हियर एंड हियर यू हैव Cl2, देन इसके लिए टेस्ट होता है AgNO3 जो Cl, और हम यहाँ पे n लिख देते हैं ना, n number of Cl you have AgNO3, you will get n number of AgCl। ठीक है, अनदर कॉम्प्लेक्स है आपके पास और यहाँ पे you have SO4। ठीक है, n numbers of SO4 you have, तो इसका रिएक्शन होता है BaCl2 के साथ बेरियम क्लोराइड एंड इट इज गोइंग टू गिव यू BaSO4। ठीक है, n moles of BaSO4। This is also white PPT, this is also white PPT। ठीक है, so if you have SO4 negative outside the complex sphere, तो कौन सा टेस्ट होगा? सल्फेट का टेस्ट होगा किसके साथ? BaCl2 के साथ। एंड इफ यू हैव क्लोरीन आउटसाइड देन व्हाट इज द टेस्ट? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, उससे आपको AgCl मिलेगा। ओके, सो प्लीज राइट दिस डाउन। हियर यू हैव कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, बट आउटसाइड द काउंटर आयंस इट इज ओनली गोइंग टू रिएक्ट। इनसाइड क्या होते हैं? सारे अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सो ये बाहर में आपके पास आयंस होते हैं, दैट इज व्हाई द आउटर वंस कैन रिएक्ट। Then guys, all of you wrote this, yes or no? Please tell me. जी लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Okay. Now do one more thing. इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है? और कल याद करके रहे, कल नहीं, आई मीन व्हेन डू यू हैव योर नेक्स्ट ये अब ट्यूसडे ना, ट्यूसडे को आपका है, ठीक है? तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करके रखिएगा। हम एक बार, आई एम रिपीटिंग दिस वंस, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। ठीक है, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। नेक्स्ट इज नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला। नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला। ठीक है, सो प्लीज लर्न दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड देन उसके आगे का हम लोग ट्यूसडे को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड